Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज मिड मंथ स्पेशल वीकली मास्टरमाइंड जहां पे हम लोग ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे सो एज टू अंडरस्टैंड दैट पिछले ऑलमोस्ट 15 दिनों में मार्केट में क्या हुआ है ऑफ नवंबर मंथ एंड व्हाट ऑल वी कैन एक्सपेक्ट 2 वीक्स डाउन द लाइन। और उसी के साथ जो भी अभी ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, निफ्टी 50 इज एमर्जिंग आउट इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू ऑल टाइम हाई जोन, प्लस बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जोन पर है। तो क्या ये यहाँ से सस्टेन करेगा या फिर यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज बनना शुरू होगी? दैट्स व्हाट वी विल एनालाइज इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। प्लस हम लोग सारे सेक्टर्स का भी एनालिसिस करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टॉप परफॉर्मिंग एंड व्हाट आर द अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, जिसके बेसिस पे हम लोग हमारी बाइंग और सेलिंग लिस्ट को क्रिएट करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल और इवन ऑन आवर फेसबुक पेज, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक जानना है और हर एक टॉपिक को डीप में अंडरस्टैंड करना है एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल ऑफ दोस टॉपिक्स एज वेल, सो मेक श्योर आप हमारी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस करके सीरीज है विच इज अ 17 पार्ट वीडियो सीरीज. The link to that is given below in the description section. Make sure you check it out and let's quickly have a look at वीकली मास्टरमाइंड फॉर दिस वीक, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके दैट व्हाट ऑल हैपेंड इन लास्ट 15 डेज. प्लस हम लोग टॉप डाउन अप्रोच का यूज करेंगे वेयर वी आर गोइंग टू एनालाइज 3 टाइम फ्रेम्स, दैट इज मंथली, वीकली एंड डेली, where monthly depicts long term trend, weekly depicts medium term trend and daily depicts short term trend from swing trading perspective. और हम लोग 7 स्टेप एनालिसिस में से 4 चीजों का यूज करते हैं, दैट इज प्राइस पैटर्न, then we use volatility, that is Bollinger Bands, and we use momentum, that is RSI. So Bollinger Bands and RSI, these are the technical tools जिसकी मदद से हम लोग volatility यानी कि मार्केट कितना क्विकली भाग रहा है इधर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड वो जानेंगे। प्लस आरएसआई की मदद से हम लोग मोमेंटम जानेंगे यानी कि स्पीड के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है. सो मेक श्योर you pay full attention and let's begin with a weekly mastermind for this week, that is for 16th of November 2025. and once again welcome to this particular episode. तो हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वील हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स. तो मार्केट इंडेक्स देखा जाए तो निफ्टी अप बाय 1.63, सेंसेक्स अप बाय 1.61, बैंक निफ्टी अप बाय 1.10. ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. देन वी हैव मिड कैप 50 अप बाय 1.57, इंडिया विक्स डाउन बाय 4.93 व्हिच इज एक्चुअली गुड, एंड यूएसडी आईएनआर अप बाय 0.02, काइंड ऑफ नेग्लिजिबल मूवमेंट है, सो दैट्स आल्सो फाइन फॉर इंडियन मार्केट्स. देन वी हैव निफ्टी 50 का चार्ट, मंथली अबव 60, वीकली ने फ्रेश 60 का ब्रेकआउट किया है, एंड देन वी हैव डेली चार्ट, यहाँ पे भी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है. बट द पॉइंट हियर इज दैट बेस्ड ऑन आरएसआई यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, प्लस यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पैटर्न भी है. जो पहले फॉर्म हुआ था यहाँ पे थोड़ा बड़ा आउटसाइड इनसाइड पैटर्न है, एंड प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो वी हैव मल्टीपल रेजिस्टेंसेज ऑन निफ्टी 50, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे थोड़ा टाइम निफ्टी 50 रुक सकता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस until it's broken out and it's been almost a year, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे हमें ऑल टाइम हाई जोन देखने को नहीं मिला है, लाइक ऑल टाइम हाई जोन के नीचे ही मूवमेंट देखने को मिली है निफ्टी 50 में. सो बिकॉज ऑफ दैट, लाइक 1 साल का टाइम हमें लग चुका है ऑलरेडी इन ऑर्डर टू सी दिस टाइप ऑफ मूवमेंट. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेके जब बुल्स का बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा देन वी कैन सी ऑल टाइम हाई जोन ऑन निफ्टी 50. अदरवाइज अगर बेयर्स का ज्यादा कंट्रोल आता है तो यहाँ से हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज भी देखने को मिल सकती है. सो दैट्स द most important thing which we have to watch out for next 1 week. Then we have bank nifty which is all 3 time frames above 60, all time high zone पे है. So overall banking sector is performing good, यहाँ पे कोई divergence वगैरह नहीं है. So again यहाँ पे देखा जाए तो मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है. एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो फ्राइडे को ओवरऑल काफी ज्यादा बेरिश मूवमेंट थी, बट लास्ट के आधे घंटे में जो मूवमेंट आई है, लाइक राइट नाउ आई कैंट शो यू द 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स चार्ट, बट वहां पे काफी अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट आई थी, लाइक 350 पॉइंट्स की 2 कैंडल्स बनी थी, बिकॉज ऑफ विच ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है एंड अल्टीमेटली इट क्लोज्ड ऑन अ पॉजिटिव नोट. अदरवाइज यहाँ पे एक इंडेसिसिव कैंडल फॉर्म हो रही थी, प्लस यहाँ पे जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ टॉप, बट यहाँ पे जो बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड हम इसको डिनाई नहीं कर सकते. ऑल्दो लास्ट हाफ एन आवर में मूवमेंट आई है, बट स्टिल दैट इज legitimate and that is not something which is illegal or wrong, which is absolutely correct, so we can't deny it as I already mentioned. So bank nifty is already performing really well. उसमें भी अगर हम लोग प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स को सेग्रीगेट करें, सो प्राइवेट बैंक्स में मंथली अबाउट 60, वीकली एंड डेली अराउंड 60.
सो यहाँ पे मेक और ब्रेक सिचुएशन है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट अगर रेजिस्टेंस ले लेता है तो यहाँ से लोअर टॉप बन जाएगा ऑन डेली टाइम फ्रेम, एंड देन इट विल मेंशन दैट आई एम नॉट सो बुलिश, एंड फॉर द टाइम बीइंग वो कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। सो प्राइवेट बैंक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर, या तो वो ब्रेकआउट देगा या तो वो रेजिस्ट करके कंसोलिडेशन में चला जाएगा। देन वी हैव पीएसयू बैंक्स व्हिच आर एक्चुअली आउट परफॉर्मिंग बैंक निफ्टी एज वेल, जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जोन पे सस्टेन कर रहा है एज लाइक इफ यू एनालाइज प्रॉपर्ली। तो मंथली वीकली डेली ऑल थ्री टाइम फ्रेम्स अबव 60, एंड जो भी एक बुलिश कैंडल भी फॉर्म हो रही है दैट इज नथिंग बट ऑल टाइम हाई जोन इन पीएसयू बैंक्स। सो दिस इज वन ऑफ द best performing sectors so far since last couple of weeks and in fact couple of months as well. Then we have sectors का analysis करें तो except realty and media all the sectors were on the positive side, जिसमें से IT was one of the best performing sector up by 3.37, followed by pharma 2.93 and infra 2.39, and overall काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है सारे सेक्टर्स की, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो निफ्टी आईटी देखा जाए तो मंथली वीकली कंसोलिडेशन में है। डेली में देखा जाए तो मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को काफी अच्छी बुलिश कैंडल्स फॉर्म होने के बाद थर्सडे एंड फ्राइडे को बेरिश कैंडल्स दिए हैं, बिकॉज ऑफ विच irrespective of 60 ब्रेकआउट वो सस्टेन नहीं कर पाया, एंड देन अगेन इट इज इन अ कंसोलिडेशन जोन। सो यहाँ पे अगेन हमें ब्रेकआउट का वेट करना होगा फॉर फर्दर मूव्स इन आईटी सेक्टर, बट सो फार इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज मंथली एंड वीकली आर इन अ कंसोलिडेशन ट्रेंड। देन वी हैव ऑटो मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में ब्रेकआउट कर चुका था बट अनफॉर्चुनेटली थर्सडे फ्राइडे को यहाँ पे भी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो ऑटो कुड ऑल्सो बी द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर फॉलोड बाय पीएसयू बैंक्स। देन वी हैव मेटल मंथली वीकली बोथ आर अबाउट 60, बट डेली में यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फॉर्म किया है, प्लस यहाँ पे लोअर टॉप भी बना है, so 60 resistance, which means it is mentioning I am not so bullish. So there's a possibility that for the time being, for next couple of weeks down the line, metal sector could go into a consolidation trend जब तक वो 60 का breakout नहीं करता है on daily time frame. Otherwise, it could also be the next best performing sector अगर daily में breakout हो जाता है तो, because monthly and weekly are already performing good and all time high zone के आसपास ही है, so that's a great thing. Then we have FMCG, all three time frames between 40-60. We'll avoid this until and unless वो breakout या breakdown नहीं देता है. Then we have energy, again similar situation, monthly consolidation में है, weekly and daily are emerging out in order to break out. So अगर यहाँ पे भी breakout हो जाता है, so this could also be the next best performing sector. But as compared to PSU banks, auto and metal, energy थोड़ा सा weak है. Why? Because monthly is in a consolidation trend, whereas बाकी sectors में monthly and weekly above 60 है. So that's the thing. So energy sector को थोड़ा कम weightage रहेगा, although that could also be the next best performing sector, but थोड़ा सा weightage कम रहेगा as compared to both of those sectors. Then we have pharma, monthly above 60, weekly and weekly is emerging out in order to break out of 60, and daily is also sustaining above 60. So there's a possibility that डेली में जो इतना कंसोलिडेशन में था उसका अभी जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर वो और स्ट्रांग होता है तो वीकली को भी वो पुश करेगा ऑन द अपर साइड, एक्चुअली पुल करेगा, and then all the three time frames will be above 60, and this could also be the next best performing sector. So this could also be the next sector which you can keep on your tracking list in order to trade on the longer side, provided it gives confirmation on the positive side. Then we have infra, monthly above 60, weekly में भी अभी फिर से breakout हुआ है and daily में भी फिर से breakout हुआ है. So infra is also performing good. ये भी एक best performing sector की list में आएगा because all three time frames are above 60. So जो भी सेक्टर्स हैं which are outperforming, उनके स्टॉक स्पेसिफिक में जाके हमें उनका भी टॉप डाउन अप्रोच करना है. वी हैव टू अप्लाई वॉल्यूम एज वेल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बाइंग वॉल्यूम है जिसमें आप पोजीशंस बना सकते हो. सो यू हैव टू डू दैट टास्क. ऑन ओनली टास्क इज दैट आई हैव टू शेयर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस ऑन इंडेक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक, ताकि आप लोगों को at least sectors समझ में आ सके that which are the sectors which are outperforming and which are the sectors which we have to completely avoid. Then we have realty, all three time frames between 40-60, we have to avoid this. Then we have media, again all three time frames below 40, इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, but for the time being यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स emerge out कर रहे हैं in order to break out and so on. तो उन सेक्टर्स में हम लोग लॉन्ग ट्रेड्स लेंगे rather than shorting the media sector and so on. So I hope that you're absolutely clear with this overall market analysis, and I also hope that आपको अच्छे से समझ में आया होगा that what's the importance of doing top down approach, that is analyzing three time frames, and what's the importance of going deep into one single concept, because so far हम लोग सिर्फ price action
पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, then few other patterns based on price action जब भी फॉर्म होते हैं, I mention those patterns. Then we have volatility and momentum. In order to understand, हम लोग ज्यादा कुछ यूज नहीं करते हैं, because this is what I've learned from my mentors, that we have to go deep into one single concept rather than going broad and understanding hundreds of concepts or technical tools. And less is more. That's what I've learned from them. So that's why I am applying less indicator, less tools, and this will give us less stress, but we'll make more money out of this by trading on swing trade and so on. So please do make sure that the way I have done the analysis, आप उसी तरीके से सारे stocks का भी analysis करो, which are actually in the outperforming sectors list. तो उन stocks का भी आप analysis करोगे तो आपको समझ में आएगा that 10 stocks में से 5 stocks outperform कर रहे हैं, 5 stocks at the verge of outperformance है. तो जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हो, एंड देन यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इन दो स्टॉक्स एज वेल. And please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.